ओके, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके, तो अपना कैमरा ऑन करो सो दैट वी कैन टेक द अटेंडेंस। ओके, और कोई है जिसको एडमिट करना है इसमें? अच्छा ठीक है, 17 प्रेजेंट है। चलो लेट मी स्टार्ट। जो हमारा वहां रह गया था, तो सो फार आई हैव टू शो दैट, actually I have to show that 3 implies 1. 3 implies 1 का मतलब 3 है which is separable, 3 का है which is separable। इनको मीटिंग होगी, वो मीटिंग में है, मुझे लगता है 1 आध घंटा। H is separable and 1 का मतलब है H has orthonormal basis, है ना? Orthonormal basis. So now we took the countable dense subset because it is separable, और उसकी मदद से जो सेट लिया था मैंने Z1 Z2, उसकी मदद से मैंने इसमें से मैंने निकाला, इसी में से छांट के एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सीक्वेंस, राइट, x1 x2 such that span of what, x1 x2, by that I mean the linear span, all linear combinations, finite linear combinations of these vectors are the same as span of, that's obvious, क्योंकि इसमें से जिनको मैंने बाहर निकाला वो लीनियरली डिपेंडेंट ही हैं, so of course they belong to the linear span of those vectors. Now by Gram-Schmidt orthonormalization जो हमने इससे पहले किया, Schmidt orthonormalization, we can find an orthonormal sequence. We can find an orthonormal set, let me call it E1, E2, so on and so forth, such that the linear span of x1, x2, so on and so forth is the same as the linear span of E1, E2, so on and so forth. It implies that linear span of Z1, Z2 then should be equal to the linear span of this orthonormal set E1, E2, so on and so forth. Okay, now, therefore, what do I have to do now? We have to show that now this is indeed an orthonormal basis. Okay, now, so therefore I can say H जो है, now as you can see H is equal to Z1, Z2 up to Z closure H, because हमने कहा ये इसका countable orthonormal set है. Now अगर मैं यहाँ पे देखूं Z1, Z2 जो है, it is contained in span of Z1, Z2, obviously, which is the same as span of E1, E2, because any vector is contained in its span. क्योंकि इसमें है इसकी सारी possible linear combination, in particular 1 into Z1, 1 into Z2, जो क्या है Z1, Z2. So इसका मतलब अगर ये इसका subset है, तो इसका closure जो है वो इस closure का subset होगा. तो इसका मतलब H जो है it would be contained inside
linear span of E1, E2 up to this का closure. But span of E1, E2, because they are vectors inside the vector space H, so it must be inside H. क्योंकि ये है तो इनका span भी because H is a vector space. तो इसका closure जो होगा वो H closure के बराबर होगा, which is H. तो इससे हमें मिला क्या? So therefore मैं सीधे लिखूंगा, therefore H is indeed equal to the span of this orthonormal set का closure, and H is equal to this closure. Now the question is, we want to show that EI is an orthonormal basis. यानी मुझे दिखाना है अगर मैं कोई वेक्टर लूंगा H में, I can find क्या बोलते हैं, I can find a finite alpha i's such that that linear combination, the linear combination of EI's such that x is equal to finite linear combination of these EI's वही मुझे दिखाना है for every x belonging to H. So let x belong to H. Now x belongs to the closure means there exists a sequence inside this closure. Implies there exists a sequence from xn सही रहेगा क्योंकि xn मैंने वहां नाम दिया ना उसको, वही दिक्कत है मुझे. लेकिन अगर तुम वो समझ लो अच्छा रहेगा. तो अगर मैं लिखूं z भी मैं यूज कर चुका हूँ, चलो xn ही करते हैं, बट यू अंडरस्टैंड इट्स नॉट दोज xn's जो मैंने वहां लिखे, वो तो ऐसे ही दरमियान में आ गए. This is not the same sequence. This is a sequence contained inside span of E1, E2 up to En, such that xn जो है converges to x. यानी that is limit n approaches infinity, xn जो है वो x. Now ये जो xn है ये सारे के सारे belong करते हैं span of the set inside. मतलब this is the definition of the closure जो हमने यहाँ की, तो यहाँ मैंने किया है. Okay, now xn जो है वो सारे के सारे span में है, तो there are some finite linear combination of EI's. So therefore for each now for चलो ऐसे में लिखता हूँ, now for each n greater than or equal to 1 there must exist unique scalars alpha in belonging to K. Of course, there are only finitely many. I should say finitely many. Finitely many, that's important. Such that ये जो xn है, it can be written as summation some finite sum जो भी है alpha I n ei. So now अगर मैं देखूं xn ei जो है, xn जो है वो बिलोंग करता है स्पैन ऑफ xn ei जो होगा it would be either alpha in or 0 depending upon ये जो ei's में जो है क्या, मतलब सपोज ei इनमें से कोई ei है जो इसके फाइनाइट सम में है, सो तब तो ये 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा. मेरे कहने का मतलब है सपोज यहाँ पे दो स्केलर्स थे अल्फा yn e1 प्लस मान लो x2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा 2n e2, ठीक है ना. तो एज यू कैन सी इफ आई टेक इट्स इनर प्रोडक्ट x विद e1, राइट, वो मुझे मिलेगा सपोज इट वुड बी अल्फा 1n using the property, यानी it would be actually equal to alpha 1n e1 plus alpha 2n e2 inner product with e1 using the properties of the inner product. This will be alpha 1n e1 plus alpha 2n
E2 E1। अब चूंकि ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसके साथ लूं E2, इट वुड बी अल्फा 2n, है ना, वो जो यहाँ इसको मैच करेगा वही आएगा, राइट। सो इफ, चलो मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ, तो once I have written like this, so अब मुझे दिखाना चाहता हूँ कि I want to show that it is indeed a basis, it is a complete orthonormal set। उसके लिए हमारी एक कैरेक्टराइजेशन है कि हम दिखाएंगे कि अगर कोई ये जो x है, अगर ये बिलोंग करेगा, अगर ये if it is orthonormal to every EI, then it must be 0, मतलब that's the idea। अगर ये हर एक EI के साथ ऑर्थोगोनल होगा, suppose now to show that EIs is an orthonormal basis, let x be perpendicular to EI, it implies that by that xEI is equal to 0 for all I। लेकिन xEI क्या होगा? X is actually the limit, so मैं ऐसे लिखता हूँ, limit n approaches infinity for certain sequence, this is equal to 0 for all, which means that, what does that mean? क्योंकि ये inner product continuous होता है, right? Which would imply that limit n approaches infinity, क्योंकि ये अल्फा आई एन ही बचेगा, बाकी तो जीरो होंगे जहां पे नॉन जीरो नहीं होगा। सो ये जीरो होगा क्योंकि बाकी तो है ही जीरो, जो बचेंगे यहाँ नॉन जीरो नंबर्स तो वो ये होंगे, यानी ये जीरो होगा एज एन अप्रोचेस इंफिनिटी फॉर ऑल आई, क्योंकि फॉर ऑल आई है, विच वुड इम्प्लाई दैट लिमिट n approaches infinity summation, ऐसे करूंगा, फाइनाइट अल्फा आई एन, अगर इनका मैं सम लूं, ई आई ये भी जीरो होगा क्योंकि ये स्केलर सारे के सारे जीरो है इन द लिमिट। तो यूजिंग, चूंकि ये फाइनाइट सम है, एंड यूजिंग दैट वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस। क्योंकि कंटिन्यूअस है तो लिमिट में इनका जो सम है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो भी जीरो आ जाएगा, बिकॉज इट्स फाइनाइट, वी आर एडिंग फाइनाइटली, व्हिच इंप्लाइज दैट लिमिट n approaches infinity, xn जो है वो जीरो है क्योंकि यही तो है x, which implies that of course x is equal to 0। तो हमने दिखा दिया कि अगर x जो है which is a vector inside h, और अगर h में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिसका मतलब ये है, और उससे हमें मिला कि अगर फिर x होगा orthogonal to any, to the whole set of these orthonormal vectors, then x must be 0. It means that x is a complete, EI is it's a complete orthonormal system, or it implies that EI is an orthonormal basis of H, which implies that H has a countable, because it's a countable set, countable orthonormal set, countable orthonormal basis। I think इसमें as far as I remember तो हमारा यूनिट थर्ड कंप्लीट हो गया। सो लेट मी स्टॉप हियर, फिर हम कल